So today we are going to study about common carotid artery. There are two common carotid arteries present. First is left common carotid artery and the second is right common carotid artery. The right common carotid artery is a branch of brachiocephalic artery. Begins in the neck behind right sternoclavicular joint. The left common carotid artery is a branch of aorta. Common carotid artery is enclosed in carotid sheath on both the sides. Now we will learn about the course of common carotid artery. The common carotid artery begins in the thorax, front of trachea left to the center of manubrium. Now it ascends back to the left sternoclavicular joint in the neck. Each artery runs upwards under the carotid sheath under the anterior border of sternocleidomastoid muscle and lies in lower forecervical transverse process. Now, where does common carotid artery differentiates into internal carotid artery and external carotid artery? So, in the upper border of the thyroid cartilage. Now talking about the relations of common carotid artery, the anterior relation consists of superior belly of omohyoid at the level of cricoid cartilage, sternocleidomastoid, anterior jugular vein, sternohyoid, sternothyroid and middle thyroid vein. अब इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें तीन एस आते हैं, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड. तो टोटल 4 एस आते हैं एंटीरियर रिलेशन में और एक एंटीरियर जुगुलर वेन आएगा और एक आएगा मिडिल थायरॉयड वेन. नाउ टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर रिलेशन. तो पोस्टीरियर रिलेशन में सबसे पहला आएगा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा C4 to C8. नाउ मसल्स अटैच्ड longus colli, longus captus, scalenius anterior, inferior thyroid artery, vertebral artery और एक duct आएगा जो कि होगा thoracic duct. Now talking about the medial relations, thyroid gland, trachea, larynx, pharynx, esophagus and recurrent laryngeal nerve. Now talking about the lateral relations, internal jugular vein and vagus nerve. अब इसका clinical anatomy क्या होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी का? तो क्लिनिकल एनाटमी इसका ये होता है कि एक्सटर्नली इम्पॉर्टेंट है पल्सेशन को फील करने के लिए, और वो पल्सेशन हम लोग कहाँ फील कर सकते हैं? जस्ट बाय कंप्रेसिंग अगेंस्ट द कैरोटिड ट्यूबरकल.